direction of motion is taken positive. तो मैंने नया तो कुछ बोला ही नहीं, फिर कुछ बोलूंगा तो बताना नया है कि पुराना. If a body is moving in a straight line, then acceleration can either be along the motion or opposite. Is this true or false? Can it be in some other direction? If a body is moving in a straight line, then your acceleration is either along the motion or opposite. Can it be in some other direction? No, 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 and no. It has to be either along or opposite. If a body is moving in a straight line, then A has to be along the motion or at the most opposite. ठीक है, ये पहले बताया जा चुका है. अब अगर एक बॉडी पे बहुत सारे क्या लग रहे हो, फोर्सेस, अब नई चीज बताऊंगा. अगर एक बॉडी पे क्या लग रहे हो, बहुत सारे फोर्सेस, और वो मूव कर रही हो इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप अपने फोर्सेस को रिजॉल्व करिए along the motion and perpendicular. Along the motion and perpendicular. For example, there are many forces, अलग अलग तरीके से लग रहे हैं, and the body is going in a straight line. तो break your forces along and perpendicular. The net force along will be mass into acceleration. And the net force perpendicular will be zero. Now question mark, why will it be zero? When a body is moving in a straight line, A has to be along the motion. ठीक है, जितने भी forces हैं उनको break up करो along the motion and perpendicular. Along will be ma, Newton's law. और जब A इस तरफ है तो perpendicular में A की क्या वैल्यू होगी, zero. तो perpendicular में जो भी net force आएगा, that will be zero. If a body is moving in a straight line and there are what acting? Many forces. Then I am teaching you this method. Break your forces along the motion and perpendicular. The net force along the motion is ma, and the net force perpendicular will come out zero always. Why? क्योंकि आपने जो अब ये फोर्स लिया है ये A के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और अगर A इधर है तो 90 डिग्री पे इसका क्या कंपोनेंट होगा, जीरो. तो 90 डिग्री पर नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो. तो क्या ध्यान रखना है कि जब बॉडी चल रही होगी और उस पर बहुत सारे क्या लग रहे होंगे, फोर्सेस, तो आप उनको ब्रेकअप करें अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर, और जो अलोंग होंगे उनको लिख दें ma, और जो परपेंडिकुलर होंगे उनको इक्वेट करके लिख दें कितना, जीरो. स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे. When a body is moving in a straight line, and many forces are acting on it, then take rectangular components along the motion and perpendicular to motion. Along the motion and perpendicular to motion. The net force along the motion will be equal to ma. And the net force perpendicular to motion and the net force
perpendicular to motion will be 0. And the net force perpendicular to motion will be 0. Tell me reason why. Because in straight line motion, A is along the motion and there will be no component of this A perpendicular to motion. Therefore, perpendicular net force will be what? 0. लिख लो इसमें. In straight line motion, लिख लो एक बार लिखने का मौका है. In straight line motion, acceleration is along the motion and the component of this acceleration perpendicular to motion is 0. Is 0. Clear?